Assalamu alaikum everyone. I am sure you are all doing well. Today's video is one of my favorites because this experiment is not only different from all the others but also delivers a stunning result. Before we start, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so you will get notifications for upcoming videos. Also, don't forget to follow me on Instagram and Facebook. Let's get started with today's video. पहले स्टेप में कॉटन को टैप वाटर में डिप करें और जब पानी अच्छी तरह कॉटन में एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे निचोड़ के पानी से बाहर निकाल लें. The first step is to dip the cotton in water, and once the water is fully absorbed by the cotton, squeeze it out to remove the excess water. अब एक प्लास्टिक शीट टेबल पर बिछा लें और कॉटन के पीस को प्लास्टिक शीट पर फैला लें जैसा कि मैंने वीडियो में फैलाया है. नाउ स्प्रेड अ प्लास्टिक शीट ओवर द टेबल एंड ले द कॉटन पीस फ्लैट ऑन द शीट जस्ट एज आई एम डूइंग इन द वीडियो. अब ब्रश या स्पंज की मदद से कॉटन पे रैंडम कलर्स लगाना शुरू करें. मेरे लिए इन एक्सपेरिमेंट्स में कलर्स का कॉम्बिनेशंस इतने अहम नहीं जितना कि ये टेक्निक अहम है. अच्छी तरह कलर्स अप्लाई करें कि वाइट स्पेस ना रहे. नाउ स्टार्ट अप्लाइंग रैंडम कलर्स टू द कॉटन यूजिंग अ ब्रश और स्पंज. For me, the combinations of colors in these experiments are not as important as the techniques used. Make sure to apply the colors well so that no white space remains. पेंट करने के बाद कॉटन को इकट्ठा करना शुरू करें जैसा कि मैं कर रहा हूँ. कॉटन के पीस को इस तरह से इकट्ठा करें कि रिंकल्स नुमाया हों और क्लोज हों. After painting, begin gathering the cotton as I am doing. Gather the piece in such a way that the wrinkles are visible and close together. अब स्पॉन्ज की मदद से कोई सा भी डार्क कलर रिंकल्स पे लगाना शुरू करें जैसे कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम. नाउ यूजिंग अ स्पॉन्ज स्टार्ट अप्लाइंग एनी डार्क कलर टू द रिंकल्स जस्ट एज आई एम डूइंग इन द वीडियो. अप्लाई जस्ट द राइट अमाउंट, नॉट टू मच नॉट टू लिटल. अब प्लास्टिक शीट को कॉटन पे फोल्ड कर दें और नरम हाथों से कॉटन को प्रेस करें ताकि तमाम रिंकल्स बैठ जाएं. अब प्लास्टिक शीट कॉटन के ऊपर से हटा दें. नाउ फोल्ड द प्लास्टिक शीट ओवर द कॉटन एंड जेंटली प्रेस द कॉटन टू फ्लैटन ऑल द रिंकल्स. आफ्टर दैट रिमूव द प्लास्टिक शीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉटन. नॉर्मल साइज़ का सॉल्ट लेके अब कॉटन पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें. बहुत ज़्यादा सॉल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं. टेक सम रेगुलर साइज्ड सॉल्ट एंड स्प्रिंकल अ लिटिल ओवर द कॉटन. अवॉइड यूजिंग टू मच सॉल्ट. आज के टाइम लैप्स में हमको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ हल्का सा सॉल्ट इफ़ेक्ट आने के बाद वीडियो को बंद कर दिया है क्योंकि कॉटन को ड्राई होने के लिए आजकल के वेदर के हिसाब से 3 से 4 घंटे लगेंगे. इसकी वजह यह है कि कॉटन पे रिंकल्स हैं और वो प्लास्टिक शीट पर है. In today's time lapse, we will have to wait a long time, which is why I have stopped the video after adding just a little salt effect. This is because depending on the current weather, it will take about 3 to 4 hours for the cotton to dry, especially since there are wrinkles on it and it's resting on the plastic sheet. कॉटन ड्राई हो चुकी है. अब इसके रिंकल्स को रिमूव करते हैं और कॉटन को फैला के देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आया है. माशाल्लाह रिज़ल्ट बेहद हसीन है
और मार्बल लुक दे रहा है। The cotton is now dry. Let's remove the wrinkles and spread out the cotton to see what kind of result we have achieved. The result is incredibly beautiful and has a lovely marble look. अब कॉटन को दोनों तरफ से अच्छी तरह आयरन कर लें क्योंकि हमने कॉटन पे सिल्क पेंट्स यूज़ किए हैं जो कि आयरन फिक्स्ड हैं। Now iron the cotton thoroughly on both sides because we have used silk paints which need to be fixed with heat. आयरन करने के बाद कॉटन के सॉल्ट निकालने के लिए टैप वाटर में 3 से 4 मिनट्स के लिए डिप कर दें। उसके बाद कॉटन के पीस को वायर पे ड्राई होने के लिए हैंग कर दें। आफ्टर आयरनिंग dip the cotton in the water for 3 to 4 minutes to remove the salt. Then hang the cotton pieces on the wire to dry. कॉटन ड्राई हो जाए तो एक बार फिर दोनों तरफ से आयरन कर लें। Once the cotton is dry, iron it again thoroughly on both sides. I have no words to fully describe this beautiful effect. Except this, the final result of this experiment looks just like a marble effect. The salt has created a beautiful texture on cotton. If you look closely, the effect resembles gently moving water, with light reflecting on the surface and shadows forming underneath. Please try this effect and share your experience with me. Don't hold back your suggestions. Write your opinions in the comments box below. If you liked the video, give it a thumbs up and share it with your other silk painting lovers. If you haven't subscribed yet, please do so. Thank you for watching. Take care of yourself and keep me in your prayers. Allah Nigeban.